Good evening, all. We'll start shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So, in this webinar, we talk about the market performance during the week, the key sectors with their performance, Nifty 50 gainer losers. So, that's in the snapshot. Following slides talk about our view or how one should plan their strategy when it comes to Nifty and the banking index. Some of the stocks, sectors that one should keep a close eye on. All this we are going to cover in next 20 minutes. Uh, Post the session, we just conduct a feedback poll followed by the Q&A session. So there is a Q&A button in front of your screen. You can use that to ask any questions related to the presentation, any sector that you wish to know more about. We can definitely discuss during the Q&A. So आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली वेबिनार में और इस वेबिनार का पर्पस ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए कैसे तैयारी करें, मार्केट में इस वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, किस तरीके से पोजीशनिंग है निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स की, कौन से स्टॉक सेक्टर्स फोकस में होनी चाहिए, ये सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद सेशन के जो प्रेजेंटेशन के बाद आपका एक Q&A का सेशन भी होगा। तो कोई भी सवाल है आपका तो Q&A बटन प्रेस करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं वहां पे लिखकर। Okay, so let's start with a disclaimer first that it's a informational webinar. It's not a trading or an investment recommendation. So before making any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें उससे पहले एक्ट करने से पहले। So this is the performance of this week. So 1% gain for both Nifty and Sensex. Third successive week of consolidation. Why? Because this range 24,500, 400 on the downside and 25,000, 25,100 on the upside. It's been almost 3 weeks now that we are seeing index hovering in this band. And this week we have ended closer to the upper band. Coming to the sectors, realty outrightly, outperforming means in the past also we were seeing that 8-9% kind of a gains. This week also 9.5%, followed by metal, financials, banking, and auto. So basically, rate sensitives along with metals were among the top gainers, while media and IT they've ended on a negative note. Top gainers from the Nifty 50 basket: Eternal, which was earlier Zomato, then Shriram Finance, Dr. Reddy, M&M, and Cipla. Losing side, or I would rather say profit taking in SDFC and SBI Life, slightly similar in Bajaj Finance. TCS means IT is anyways on the back foot, and then Tata Steel. So this is how the market panned out during the week. तो ये जो हफ्ता आज खत्म हुआ उसका ये ब्यौरा, तीसरा लगातार हफ्ता कंसोलिडेशन का, 24,400 500 का नीचे का बैंड, ऊपर 25,000 25,100 का बैंड। तो उसी में ही हम घूम रहे हैं। तीन हफ्ते हो गए हैं और इस हफ्ते भी उसको ब्रेक नहीं कर पाए। और बट ये है कि हाँ, फ्राइडे के दिन जो क्लोज हुआ, वीक का जो क्लोज हुआ वो अच्छा क्लोज हुआ, करीब 1% के गेन के साथ और अपर बैंड के पास। बाकी ऑब्वियसली विल डिस्कस इन डिटेल इन द फॉलोइंग स्लाइड जब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स के बारे में। सेक्टोरल फ्रंट पे ज्यादातर पॉजिटिव। रियलिटी जो सेक्टर है वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे पास में भी जाके, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। बाकी अदर रेट सेंसिटिव वहां पे भी पॉजिटिव थे। गेनर लूजर्स में कोई ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं दिखेगा आपको, मींस अक्रॉस सेक्टर्स आपको गेनर्स लूजर्स दिख जाएंगे। नाउ द की पार्ट, Nifty banking index, how we are positioned and how one should approach the markets. So this is the daily graph of Nifty index, and that is what I was sharing, that it's almost 3 weeks now that we are trading in this band, right?
Of late, during the week, we breached this mark, the first line of defense 20 EMA for brief, but in the following sessions, we reclaimed that. So this indicates that bulls are not in the mood to loosen their grip. This happened in past also, means here also, as you can see that we breached this mark for brief 20 EMA and then again reclaimed. Now, if you will see that it's only one or two candles which were decisive enough during this consolidation. Otherwise, very small candles, or in the losing side, these are the two decisive candles. Otherwise, more of indecisive candles. So until we break this hurdle of 25,200 decisively, this consolidation might continue despite all the positivity. So do we have any sign that are we going to break this consolidation? So the answer is yes. Finally, the banking index, which was struggling, or I would rather say trading in a range because it was trading closer to the record highs, finally could manage to break on the higher side. So probably the rate sensitive pack, means banking, auto, reality, they may continue to see the rub off of what was seen in today's session in the coming week too, alongside with the others. So what it means is that probably next week we might see an attempt of a breakout above 25,200, which could help the index to inch toward 25,600, which we have been discussing for last 3 weeks. Right? तो देखिए 3 हफ्ते हो गए हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक कुछ होना नहीं है, और रेंज का ब्रेकआउट के लिए बैंकिंग के ब्रेकआउट की इंतजार था. तो आज बैंकिंग का ब्रेकआउट आ गया. ऑब्वियसली फॉलोइंग स्लाइड में हम बात करेंगे उसके बारे में. तो अब निफ्टी को ब्रेक के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर बैंकिंग इंडेक्स का ब्रेकआउट आ गया है तो अब इसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि 25,200 के ऊपर जाए और 25,600 तक एक्सटेंड करे इस मूव को. राइट, नीचे के केस में 24,600 24,200 का जोन ये सपोर्ट एरिया रहेगा, बट 24,600 के नीचे फिर दोबारा से बायस आपका शिफ्ट हो जाएगा साइडवेज टू नेगेटिव. जब तक 24,600 होल्ड हो रहा है तब तक तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना चाहिए. स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे आपका फोकस होना चाहिए. तो रेट सेंसिटिव मींस जो आपके बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, ये सब आपके रेट सेंसिटिव्स होते हैं. तो इनमें आपको अच्छा इंटरेस्ट आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा. लास्ट वीक अगर आपको याद होगा प्रेजेंटेशन में हमने बात की थी एचडीएफसी बैंक और पीएनबी की, जबकि इस वीक पॉलिसी थी. तब भी हमने शेयर किया था कि वहां पे एंटिसिपेशन ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है. तो फाइनली वो स्ट्रैटेजी प्ले आउट हुई और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले बोथ आपके बैंकिंग स्टॉक्स में. तो अभी भी वही है कि जिस तरीके से टोन है मार्केट का, जिस तरीके से क्लोज हुआ है, पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 25,200 के ऊपर. तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है, उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को फोकस करें. तो बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो ये तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे स्टॉक को चूज करना. दूसरे सेक्टर्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. जैसे मेटल्स की हमने बात की, वो अमंग द टॉप परफॉर्मर भी था. तो इस तरीके से आपको पोजीशन करना है. टोन पॉजिटिव है. 24,600 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आपको तेजी बना के रखनी है. 25,200 ब्रेक होगा तो मोमेंटम फिर से आ जाएगा 25,600 तक के लिए. Right, so this is about Nifty. Now let's talk about banking index. So this is what we were discussing, right? This range, almost 1 month long consolidation. This is today's candle, Friday's candle, and this is the breakout. So this is what we were waiting for, means almost 1 month long consolidation ended in the banking index with a decisive candle on a decisive day when RBI announced a surprise 50 basis point cut in the CRR also in the staggered manner. So this triggered a strong
up move in banking and financial pack, and the banking index also settled closer to the weak side. So after this breakout, where are we heading? So earlier this trend line was around 57,500, which has now shifted to around 58,000 mark. So that would probably be the first hurdle that the index is going to face, and then probably towards 60,000 plus zone, right? Again, if it retraces below this 56,000 or 55,500 zone, means the key support is at 500, 55,300. But even if we retrace below the breakout candle, then probably we might extend this consolidation. So as of now, I doubt that after this, decisive break, that we are going to witness any serious correction. But still, since it's more about trend following instead of predicting the markets, so for existing longs, 55,800 and 55,300, that should be your stops, with 5800 as a target, when it comes to the banking index. राइट। तो देखिए, जो एक महीने और लास्ट 3 वीक से हम जो बात कर रहे थे कि भाई अगर मार्केट को चलना है तो बैंकिंग को चलना पड़ेगा, और बैंकिंग ही ट्रिगर दे सकता है 25,200 के ऊपर ले जाने की। तो बैंकिंग में तो इस बार ब्रेकआउट आ गया फ्राइडे के दिन आज के सेशन में। अब निफ्टी में कब आता है वो देखना है, बिकॉज 58,000 तक के लेवल्स बैंकिंग में, ये जो लाइन दिख रही है आपको, राइट, उसको टेस्ट करने के लिए करीब करीब 58,000 तक पहुंच जाएगा आपका बैंकिंग इंडेक्स। और इस रेंज को भी अगर आप देखेंगे, जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, करीब करीब 2000 पॉइंट की रेंज थी, 1500 से 2000 पॉइंट की, तो उसके हिसाब से भी करीब 58,000 का टारगेट आता है। तो बैंकिंग में टोन पॉजिटिव है, बट यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की जरूरत है। जैसे कि मोमेंटम उस तरीके का नहीं दिख रहा है आपको। आप स्टॉक देखने जाएंगे तो शायद आपको नजर आएगा कि यार अभी किसको मैं चूज करूं, बिकॉज HDFC बैंक वहां पे डिसाइसिव ट्रेंड देखा, ICICI में रिकवरी आ रही है, बट उतना स्ट्रॉन्ग टोन नहीं है उसका। एक्सिस कल तक गिरा हुआ था, आज एक अच्छी रिकवरी आई। इंडसइंड बैंक हम सबको पता है चैलेंजेस, ग्रेजुअली स्टेबल हो रहा है, बट अभी तक उस तरीके का मोमेंटम नहीं है। कोटक में भी वही है। तो it becomes very important that even if the index is showing a clear sign of breakout, stock selections become the key to play out this, positive sentiments or positive momentum, right? So कैसे आप किस स्टॉक को चूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने बात की थी HDFC बैंक की, तो वहां पे एक अच्छा मूव एंटिसिपेटेड है, कंटिन्यू रहे। सेलेक्टिवली SBI फ्रॉम दी PSU स्पेस, जहाँ पे कि अभी तक मूव नहीं आया है, एंटिसिपेशन है कि वहां पे एक पार्टिसिपेशन देखने को मिले। एंड देन वी हैव स्टॉक लाइक CUB, IDFC, फर्स्ट बैंक, छोटे नाम है बैंकिंग में, वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, राइट। यहाँ पे टोन पॉजिटिव है, 58,000 इज व्हाट वी आर आइंग इन बैंकिंग इंडेक्स। So this is about both Nifty and the banking index. Now let's talk about stocks. So when we say rate sensitive, we talk about 3 key sectors: banking, auto, and realty. So within the auto, surprisingly, Ashok Leyland has been consistently performing well. Means earlier it used to be a different, tone in Ashok Leyland, that it used to underperform. But in the recent, months, I've been consistently seeing that this stock is not participating much on the downside. But the moment we see recovery or a reversal, it is among the first one, right? So this is the weekly graph. Means after this marginal consolidation, it recovered strongly this week, and we anticipate a gradual move towards the record high zone, right? So Ashok Leyland, जो कि ऑटो स्पेस में से M&M और अशोक लेलैंड, इन 2 नामों को जरूर आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है।
और हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में जल्दी आपको इसमें नए हाई भी देखने को मिल जाए, दोनों ही स्टॉक्स में। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। Next on the list, Glenmark. So it's not about the rate sensitive alone, means banking, जहाँ पे breakout हुआ है, and the other auto and realty part. As we all know that they have done exceptionally well, especially the realty counters. So again, a word of caution, uh, especially in the realty counters, because this space was buzzing from last 3 weeks, right? If you see, go back and see our previous webinars. In last 4 week, if I am recollecting right, it was around 9% kind of a gain, and then 3.5% kind of a gain for 2 consecutive week for realty index, and this week 9% again. So after the actual event, pans out, it's usually a time to book at least partial profit. So it's not outrightly that I'm saying reality is done now, or we may see correction across the board. But at least for the stocks which have seen strong surge like DLF and all, one needs to be cautious. So that's the reason why I have included Glenmark to my list from the pharma space. So almost a year-long correction has ended. As you can see, it's a trend line reversal with a decisive breakout candle and a follow-up move. So this indicates a possible outperformance within the pharma space, because within the pharma space, we are seeing mixed trend. Means at one end, Divis, Dr. Reddy's, Glenmark, they are all doing well. At the same time, Biocon, Granules, Sun Pharma, Lupin, they are struggling or they are trading in a range. So here one stock from the defensive basket, which one should keep in radar for the next week on long side. देखिए ग्लेनमार्क थोड़ा सा अभी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई अगर सब चीजें वही है कि बैंकिंग ही ड्राइव करेगा या फाइनेंशियल ही ड्राइव करेंगे, तो फिर ये डिफेंसिव नाम क्या कर रहा है लिस्ट में, ये फार्मा का नाम क्या कर रहा है। तो अगर मार्केट में कोई ऐसा टोन चीज जो सब उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर वहां पे सरप्राइजेस भी आते हैं। तो उस टाइम पे ये सोचना कि अब क्या करें, इससे बेटर है कि पहले ही प्रिपेयर रहें। तो डिफेंसिव्स में अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। तो जैसे कि फार्मा में ग्लेनमार्क में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो ट्रेंड रिवर्सल है, ये डिसाइसिव ट्रेंड है। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, बावजूद इसके कि रेट सेंसिटिव और जो बुलिश ज्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल्स में, उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैक्शन बना रहे। Lastly on the list, surprise element PFC. So I'm sure that most of you might not be seeing this stock in your watch list nowadays, for the obvious reason, cause not doing anything at all. Means this is the weekly graph, and it's been almost nearly 2.5 months that we are hardly seeing any action. So which is natural for a trader to focus more on sector and themes which are showing traction. But I feel now that basis the chart reading and the kind of indication that we have, probably we are set for a breakout from this base formation in PFC and REC in coming days. So again, where the momentum is already there, everybody is gung-ho about the positive tone. This stock is something that is not moved at all or participated in the trend at all, offering accumulation opportunity. So देखिए, एक
जगह तो ये है ना जहाँ पे कि डिफेंस हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल्स हो, सभी उसकी बात भी कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि साइडलाइंस पे बैठे हैं और बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वैसे कुछ नामों में से जैसे कि हो सकता है कि ये शायद नेक्स्ट वीक इनिशियली ना चले या फिर शायद पूरे नेक्स्ट वीक ही ना चले, बट ये जो कंसोलिडेशन है टाइट रेंज का, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जल्दी यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। और जब आप इनिशियली मूव के टाइम एंटर करते हो, तो अ, जो दूसरे फिर बाद में आएंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और आपके लिए एक हायर लेवल्स उस टाइम पे बन जाते हैं टारगेट्स के। तो दिस इज समथिंग दैट वन कैन कीप अ क्लोज आई ऑन। मींस 420-25 का जोन इन केस इफ इट क्रॉसेस पीएफसी में, then probably we are set for the next leg. So this is third stock from that list which one should keep on radar. So just to sum it up, our view is positive when it comes to the Nifty and banking index. Though the consolidation is still on in Nifty, means this range 24, 450, 500 on the lower side, 25, 25, 100 the higher side, still there. But with the breakout in banking index, we anticipate this range to end soon and Nifty to inch toward 25,600. For banking, 58,000 is what we are targeting. And on the stock specific front, Ashok Leyland, Glenmark, and PFC is something that we like. राइट? तो देखिए, जो पूरे इस सेमिनार वेबिनार का जो सार है हमारा कि निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में पॉजिटिव टोन के साथ जाएं नेक्स्ट वीक, और 24,600, 53, 55,300 ये की सपोर्ट्स रहेंगे पूरे वीक के लिए। ऊपर में करीब 25,600 तक के टारगेट्स और 58,000 तक के टारगेट्स निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक अशोक लेलैंड की बात की, ग्लेनमार्क की बात की और पीएफसी की बात की, जहां पे मूव अभी तक नहीं आया है और आ सकता है आने वाले दिनों में, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अब इस प्रेजेंटेशन को हम करेंगे बंद, एंड देन विल हैव अ क्विक फीडबैक पोल, and then you can start posting your questions. So please fill in your feedback and then you can start posting your questions using that Q&A button which is there in front of your screen. कोई भी सवाल है आपका, Q&A बटन अभी जब भी आप फीडबैक दे देते हैं एक बार, उसके बाद फिर अपना इस बटन को यूज करिए और कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक सवाल हो, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज में फिर ये सेशन कभी एंड ही नहीं होगा, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपना सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे सो दैट सबको बेनिफिट हो। Those who are done with the feedback, they can start posting their questions using that Q&A button. Please quickly fill this feedback so that we can start with the Q&A. We are almost done. All right. So instead of raise hand, please use this Q&A button. देखिए, सवाल पूछने का एक तरीका ही वही है कि Q&A बटन आपको यूज करना है, उसके थ्रू आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, राइट? ओके, सो
First question from Mr. Kailash. Will the retail sector will also see a move or participation ahead? So as of now, we are not seeing this trend emerging. Means if you see the stocks from the retail space, uh, some of these stocks who are under tremendous pressure, like Aditya Birla Fashion, but it was due to some block deals and all. And otherwise, also, I've not seen any major stock in the retail space, witnessing any serious traction. So as of now, the prudent approach is to stick with the themes or sectors which we've discussed and wait for clarity or confirmation when it comes to this space. Okay, Soumitra has question on pharma space. So pharma is a sector like Soumitra, we've shared about Glenmark and talked about the sector also in the brief. It's not that all these stocks are negative or so holds true for the overall positive or stocks which are advancing in the pharma space. So it's a kind of a mixed bag for pharma at present. So Dr. Reddy's, Divis, Glenmark, these are three names which I can recall right now, wherein we are seeing consistency or a fresh breakout. The rest of the pack is something which is sitting on the sidelines. So like Sun Pharma, Lupin, Biocon is still struggling. So one should stick with the performer, when the sector is still under consolidation. Okay. Next, we have question from Vipul on railways. So yes, railways stocks. So it's a phase basically which I'm observing that initially it started with the defense stocks, then it cascaded to railways, and then to the PSU banks. Again, yesterday, or in fact a day before, it was railways which were under focus. So yes, it seems like that after a year-long corrective phase, we are seeing a reversal in some of these railway stocks. But again, one needs to be selective in this space. Means mostly stocks, they are still down roughly around 40-45% from their record highs. So we have room. But stock like Railtel, IRFC, RVNL, IRCON, these are the stocks wherein we may see strong traction in the following weeks also. So yes, you can keep railway stocks in your radar. Okay, next, again, anonymous attendee and questions around banking stocks. So banking, anyways, we've shared that we have a positive view. So be it SDFC, be it SBI, the tone looks positive to us, and one can continue to hold. And same hold true for Federal Bank Lavanya, that it is among the steady performer. And in fact, the good part about Federal Bank is it didn't participate much during the recent, decline, or recovered very strongly, and it's inching towards its record highs. So yes, the second rankers is something also that you can continue to hold. Okay, so this is something, obviously it comes during the Q&A that if we are bullish about banking, then why not Yes Bank in the list? So we all know that the kind of transformation which is going on at Yes Bank level, we have had multiple news related to the stock. But I believe that when it comes to the short-term trading approach, one should be focusing more on the performers or these stocks which are leading within the sector. So as of now, I would suggest to sit on sidelines or wait
for Yes Bank to cross again 22.5 levels to re-enter and wait for 24, 25, 4.5 kind of a levels. But as of now, the other stocks which we've discussed within the banking basket looks comparatively better. Okay, Chandramouli ji has question on transportation and logistics. So, logistic as a space, I guess we've discussed a couple of weeks ago also during this webinar, and we are still not seeing any sign of decisive reversal or recovery within this space. So, of late we had 1 week BRL was seeing some traction, but the entire sector is not something that we have seen any meaningful move. So as of now, the recommendation is to wait for some CS participation, or means price action with volumes if the view is short term. And if you have made investment, long-term investment, then definitely you can stay put. So Ravindra, in case if you have missed this session, it is okay. You can just go on our Religare online YouTube channel and you can just see this entire video from start. It's live on YouTube also. So no problem. Otherwise, next week, same time at 4 o'clock, we'll connect again and talk about the next week. Okay. So many stock specific questions. So I always request that we should stick with the sector specific queries first. Okay, the next we have from Mr. Rajiv Kumar and FMCG and sugar. So both sectors are not participating, and majority of the stock from FMCG basket, they are still struggling. So Britannia, Marico, they are comparatively better structures, within the FMCG basket. Rest of these stocks I are either trading in a range or witnessing decline. And sugar, of late we were seeing that selective participation was there, means Dhampur, Balrampur, but not a similar kind of a quantum which we used to see earlier. So here again, selectively, yes, you can pick from both FMCG and sugar. But in case if the view is short term, their performance might disappoint you, right? Because if you are sitting in a way, so be it logistic or the other sectors which are not participating yet, buying those names, in the current market scenario where nobody is talking about, is a good move. But if you have time or patience to hold, means it might take a week, 10 days, a month or 2 months, or maybe more than that. So within those sectors, it's definitely a good idea if you start accumulating, but your view should be longer. If the view is, let's say, for next week, then definitely these sectors are going to disappoint you, right? Okay. See, most of the queries are stock specific. So again, I would reiterate my view when it comes to auto space, iShares, M&M, Ashok Leyland. Top three names. And yeah, TVS also. Rest of the stocks, they might witness a rebound, be it Maruti, Bajaj Auto, Hero Motoco every now and then, but the outperformance is something that is missing from these names, including Tata Motors, right? So avoid if the view is short term and stick with the performers, right? And yeah, so with this, we have answered all the queries. Couple of queries we couldn't take are the penny stocks or stocks which you usually don't track. So in case if you're associated with us, you can definitely ask us separately through your branches or your
business partners. So thank you everyone for participating this week. Next week, same time, we'll connect again. Till then, take care. Bye-bye.